MCQ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट, 34 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? इन ए वोमेन ऑन सबडर्मल प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट द मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी सीन इन। तो इन सबडर्मल प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट in subdermal progesterone implant menstrual abnormality seen। menstrual abnormality seen कौन सी होती है? ऑप्शन 1 मेनोरेजिया, ऑप्शन 2 मेट्रोरेजिया, ऑप्शन 3 पॉलीमेनोरिया या ऑप्शन 4 एमिनोरिया। फिर से देखिए, सबडर्मल प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट द मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी सीन इज मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पॉलीमेनोरिया या एमिनोरिया। एंड द राइट आंसर इज मेट्रोरेजिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, अ प्रेग्नेंट फीमेल 38-year-old had a child with Down syndrome. How do you assess the risk of Down syndrome in the present pregnancy? तो 38 year pregnant had history of Down syndrome child, ठीक है ना? Then as how to assess the Down syndrome in present pregnancy? How to assess Down syndrome in present pregnancy? How to assess Down syndrome in present pregnancy? Option 1 maternal alpha fetoprotein, maternal alpha fetoprotein, option 2 maternal HCG, option 3 ultrasound या option 4 chorionic villus biopsy। देखिए, a female pregnant 38-year-old had a child with Down syndrome. How do you assess the risk of Down syndrome in the present pregnancy? Maternal alpha fetoprotein, maternal HCG, ultrasound या chorionic villus biopsy? And the right answer is chorionic villus biopsy। Question number 36 देखेंगे। A woman comes with post-dated pregnancy at 42 weeks. The initial evaluation should be। तो 42-week pregnancy initial evaluation क्या करेंगे? ऑप्शन 1 induction of labor, option 2 review of previous menstrual history, option 3 cesarean section या ऑप्शन 4 अल्ट्रासाउंड। फिर से देखिए, आप 42 ईयर प्रेगनेंसी इनिशियल इवेल्युएशन, इंडक्शन ऑफ लेबर, रिव्यू प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, सिजेरियन सेक्शन या अल्ट्रासाउंड। एंड द राइट आंसर इज रिव्यू प्रीवियस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, Kalavati, a 29-year-old nulliparous woman, complains of severe menorrhagia and lower abdominal pain since 3 months. On examination, there is a 14-week size uterus with fundal fibroid. The treatment of choice is। तो 29-year female, ठीक है ना, nulliparous complains of severe menorrhagia with
severe menorrhagia, severe menorrhagia, ठीक है ना, and lower abdominal pain, and lower abdominal pain since 3 months, since 3 months, ठीक है ना. On examination there is 14 week size uterus, 14 week uterus with fundal fibroid, ठीक है ना. तो मुझे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें क्या करेंगे. ऑप्शन 1 मायोमेक्टोमी, ऑप्शन 2 GnRH analog, ऑप्शन 3 hysterectomy, ऑप्शन 3 hysterectomy, या ऑप्शन 4 wait and watch, ऑप्शन 4 wait and watch. फिर से देख लीजिए. 29 year old nulliparous with severe menorrhagia, lower abdominal pain for 3 months. On examination, she has 14 week uterus with fundal fibroid. What is the treatment of choice? Myomectomy, GnRH analog, hysterectomy, या wait and watch. And the right answer is myomectomy. Question number 38 देखेंगे. Question number 38. The drug that inhibits uterine contractility and cause pulmonary edema is. तो drug inhibiting uterine contraction and causing pulmonary edema कौन से होते हैं. ऑप्शन 1 रिटोड्रीन, ऑप्शन 1 रिटोड्रीन, ऑप्शन 2 निफेडिपिन, ऑप्शन 2 निफेडिपिन, ऑप्शन 3 इंडोमेथासिन, ऑप्शन 3 इंडोमेथासिन, या ऑप्शन 4 एटोसिबैन, ऑप्शन 4 एटोसिबैन. फिर से देखिए. ड्रग इनहिबिटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग पल्मोनरी एडेमा इज रिटोड्रीन, निफेडिपिन, इंडोमेथासिन, या एटोसिबैन. एंड द राइट आंसर इज रिटोड्रीन. क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछ रहे हैं ये लोग. A 48-year-old female suffering from severe menorrhagia DOB underwent hysterectomy. She wishes to take hormone replacement therapy. Physical examination, breasts are normal but X-ray shows osteoporosis. The treatment of choice is. For a 48-year female, ठीक है ना, suffering from severe menorrhagia, having severe menorrhagia, and this is DOB. This is a case of DOB. ठीक है ना. Had hysterectomy, but wishes hormone replacement therapy. ठीक है ना. Physical examination and breast are normal. But on X-ray is showing osteoporosis. तो पूछे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगी. ऑप्शन 1 प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 2 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 2 एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन 3 एस्ट्रोजन, या ऑप्शन 4 नन.
फिर देखिए 48 ईयर फीमेल विथ सीवियर मेनोरेजिया हैविंग DUB had hysterectomy and wishes HRT. On physical examination, breast is normal. X-ray is osteoporosis, showing osteoporosis. What is the treatment of choice? Progesterone, estrogen and progesterone. Estrogen, yeah, none. And the right answer is estrogen. Estrogen. Question number 40 देखेंगे. Question number 40. ठीक है ना. In a woman having previous history of cesarean section, all of the following are indications for trial of labor except. ठीक है. तो having previous cesarean section, ठीक है ना, indication for trial of labor. In this indication for trial of labor, indication for trial of labor are all except option 1 occipito-posterior position, occipito-posterior position, option 2 fetal distress, fetal distress, option 3 breech presentation, option 3 breech presentation, या option 4 mid pelvic contraction, option 4 mid pelvic contraction, mid pelvic contraction. तो फिर से देखिए, previous cesarean section, indication for trial of labor are all except occipito-posterior position, fetal distress, breech presentation या mid pelvic contractions. And the right answer is none. The right answer is none. सारे के सारे करेक्ट आंसर है. ठीक है ना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.